Hardik Kiani reaches flood-affected areas to support people of Pakistan. Renowned singer and actor Hardik Kiani, known for his soulful voice and impactful performances, recently visited the flood-hit areas of Pakistan to extend his support to the victims of this natural calamity. The devastating floods have displaced thousands of families, destroyed homes, crops, and infrastructure, leaving people in dire need of assistance. Hardik Kiani, apart from being a celebrated figure in the entertainment industry, has always been recognized for his humanitarian spirit and sense of responsibility towards society. As soon as the news of the massive flood spread, he immediately decided to step forward and stand with his fellow citizens during this crisis. Upon reaching the affected region, Hardik personally met with families who had lost their shelters and belongings. He listened to their problems, shared their grief, and assured them that they were not alone in this difficult time. His presence not only brought hope, but also motivated other volunteers and organizations to speed up their relief work. During his visit, he distributed food packs, clean drinking water, clothes, and medicines among the victims. Hardik also made arrangements for temporary shelters and announced that he would contribute financially to the rehabilitation of affected families. His team coordinated with local authorities to ensure that aid reached the most deserving people without delay. Speaking to the media, Hardik Kiani emphasized that the floods were a national tragedy and that it was the duty of every privileged citizen to play their part in supporting the needy. He also appealed to the public, business community, and fellow artists to come forward with donations and relief efforts. The singer-actor's initiative was widely appreciated on social media, where fans and followers praised his compassion and humanity. Many highlighted that celebrities using their influence for positive causes can bring attention to issues that often go unnoticed. Hardik Kiani's efforts prove that true. Heroes are not only those who shine on the screen or stage, but also those who stand with people in times of adversity. His humanitarian gesture has set an example of unity, care, and social responsibility, reminding the nation that together, challenges can be overcome. यहाँ पे बह गए और जितने लोगों के मवेशी जो हैं वो बच गए हैं, वो उनको भी खाने की जरूरत है और इंसानों को भी खाने की जरूरत है। वो बीमारी भी नाल मार से बड़ी लगी है, बीमारियां भी लग गई हैं यहाँ पे जी। तो यानी कि इनके मवेशियों को भी जो है वो मेडिकल एड की जरूरत है और इंसानों को भी यहाँ पे एड की जरूरत है, क्योंकि यहाँ मलेरिया, मच्छर, यहाँ के लोगों ने यहाँ से नकल मकानी कर ली, यहाँ से निकल गए, चले गए, फिलहाल निकले हुए और मवेशी जो है वो ये आप लोगों ने रखे में, और बाकी के मवेशी कुछ सुना मर भी गए हैं, कुछ मरे तो हैं, लेकिन कुछ भी इधर से कुछ कर दिया, लेकिन कुछ इधर ही है ना, कुछ इधर ही है। ठीक है, ठीक है। और ये देखें पानी के हालात, ये तो बहुत ज्यादा, इसका लेवल बहुत ज्यादा होगा जिस टाइम सैलाब आया, बहुत ज्यादा था, ये अभी कम हो गया, काफी कम हो गया। ठीक है, ये गांव है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो डिस्पर्स हुए हैं, उनको इवैक्यूएट किया गया है और इन लोगों को रिलीफ की ज़रूरत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कितना पानी है सैलाब का यहाँ पे आया हुआ, यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करवा लिया है पाकिस्तान आर्मी ने भी, और यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत NGOs काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे रिलीफ वर्क, राशन की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, उसके अलावा जो चादरें, तकिए, बिस्तरे, और अब सर्दियाँ आएंगी तो ज़ाहिर है सर्दियों की चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी, और जानवरों का खाना जो है वो भी यहाँ पे चाहिए। बहुत सारे मवेशी जो हैं वो भी यहाँ पे बह गए और जितने लोगों के मवेशी जो हैं वो बच गए हैं, वो उनको भी खाने की जरूरत है और इंसानों को भी खाने की जरूरत है। वो बीमारी भी नाल मार से बड़ी लगी है, बीमारियां भी लग गई हैं यहाँ पे भी है जी। इनको वेटनरी डॉक्टर, इन डंगर डॉक्टर भी चाहिए और इनको इंसानों का डॉक्टर भी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ की नीड है बंद बनाना। बंद यहाँ पे बनेंगे तो इन लोगों की जिंदगी जो है ना वो आगे मुसीबतों से बचेगी। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मवेशियों का बहुत बुरा हाल है, इंसानों का बुरा हाल है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बीमारियां फैल रही हैं। हर वक्त बुरा है, आने वाला हर वक्त बुरा, यानी आने वाला हर वक्त यहाँ पे मुश्किल लग रहा है। माजी गुजर गया और अब मुस्तकबिल जो है ना वो और भी मुश्किल नजर आ रहा है।
اور اگر یہاں پہ انتظام نہ کیا گیا تو گورنمنٹ کو بھی بر وقت یہاں پہ جو ہے نا اقدامات لینے چاہیے, یہاں بند بنانے چاہیے, ان کے مویشیوں کے لیے ڈاکٹرز سپلائی کرنے چاہیے, اور اس کے علاوہ انسانوں کے لیے بھی یہاں پہ کیمپس لگنے چاہیے, کیونکہ یہاں پہ بہت ساری بیماریاں اور بڑا مسئلہ کہ ڈنگر بھوک سے مر گئے ہیں. تو ڈنگر تو آپ کے لیے ظاہر ہے آپ کا خزانہ ہے ڈنگر. دودھ پیتے ہیں. ہائے آپ دودھ پیتے ہیں اس کا, تو اب کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بچوں؟ اب وہ یہاں سے تھوڑی کھانے دینے آتے ہیں یہاں, ہاں اور دے دیتے ہیں ساتھ میں, اور بھی ڈنگروں کا چارہ بھی ایک بار سیلے جا رہا ہے, اس لیے تھوڑا سا گزارا ہو جائے گا ڈنگروں کا, تھوڑا سا گزارا ہو جائے گا, لیکن اس میں یہاں پہ زیادہ امداد کی ضرورت ہے. یہ چاول کی فصل ہے اور یہ آپ حال دیکھ رہے ہیں, اور آپ سوچیں کہ ہمارے لوگوں کا کتنا نقصان ہے یہاں پہ, کہ چاولوں کی فصلیں تباہ ہوئی پڑی ہیں, اور ہمارے ملک کی اکانومی کا کیا بنے گا, یہ آپ ذرا چیک کریں, یہ تباہی ہے. بڑا مسئلہ کہ ڈنگر بھوک سے مر گئے ہیں. ہاں تو ڈنگر تو آپ کے لیے ظاہر ہے آپ کا خزانہ ہے ڈنگر. دودھ پیتے ہیں. ہائے آپ دودھ پیتے ہیں اس کا, تو اب کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بچوں؟ اب وہ یہاں سے تھوڑی کھانے دینے آتے ہیں یہاں, ہاں اور دے دیتے ہیں ساتھ میں, اور بھی ڈنگروں کا چارہ بھی ایک بار سیلے جا رہا ہے, اس لیے تھوڑا سا گزارا ہو جائے گا ڈنگروں کا, تھوڑا سا گزارا ہو جائے گا, لیکن اس میں یہاں پہ زیادہ امداد کی ضرورت ہے. تو ہم لوگوں سے مل کے, ہم بچے یہ جو ہے نا, یہ ہمارے بچے پیارے بچے, یہ مل کے اپیل کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ لوگ مدد کریں یہاں کے لیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ان لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے. دیکھیں ان کی جگہ ہم بھی ہو سکتے ہیں, ان کی جگہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. ان کے گھر تھے, ان کے سارے یہاں پہ مویشی تھے, ان کی فصلیں تھیں, یہ لوگ بہت خوشحالی سے زندگی گزار رہے تھے, اور یہ سیلاب نے ساری تباہی پھیر دی ہے. تو آپ لوگوں کے اوپر اب ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کی کتنی ہیلپ کرتے ہیں.